Hello everyone. So in previous classes we have already discussed what in previous classes we have already discussed the reflection and laws of reflection and conditions for the reflection and the property everything. Now we will discuss the refraction. Chapter 4 Selena ICSE both. This topic is both benefit or both are coming in CBSE and ICSE also. CBSE अल्प देते हैं, ICSE के फास्ट देते हैं. No doubt ICSE आउट के फास्ट देते हैं. Come to the topic refraction. First of all, a quick revision करेगा. First of all, what is reflection? Reflection पढ़े थी. What is reflection? Chapter 4 reflection of light at plane surface. Chapter 4 refraction of light at plane surfaces. At plane surfaces. ठीक है जी. Okay. First of all, what is refraction? In previous lecture, in previous classes, we have already discussed reflection, the property or bouncing back of light. Reflection. What is reflection? Bouncing back of light. In जो previous lecture देखी ना, जब पूरा वीडियो देखी तो मैंने सेते पूरा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करा जायछि. Then next come to refraction. जो क्लास अटेंड करूना, जितने क्लास अटेंड करूना ऑन से गला हमरो ईशान भी अटेंड करूना, अभिषेक चंदन रितेश एवरीबॉडी और रिपीट करिबि नै आ मार्क को बोले देखियो तो माने ना. ठीक अछि. जो क्लास अटेंड करूना बारंबार देखियो. ठीक अछि. एंड रेगुलर क्लास अटेंड करो. पॉइंट नंबर 1. Point number 1, refraction. What is refraction? Reflection command कौन पढ़ते हैं? Simple. Bouncing back of light. When light is coming from one medium to when it strikes with a opaque object or reflecting surface. Reflection कौन पढ़े थे? After striking it back to the same medium. After reflection, the reflected ray it back to the same medium. Red pen नहीं मगर. अच्छा. Back to the same medium. This property is called as reflection. And some portion of light, the light ray as actual light कौन? Photon particles. And light have dual nature. कोई थे तुम क्लास रे. And both particle nature and wave nature. The light ray जितना बड़ा से after striking with the surface, it goes back to the same medium. Is called as reflection. पढ़े थे. Just quick recap करिए. And some portion of light get absorbed by the substance. That is called as absorption of light. There is so many different properties of light. Among them, refraction is one property. What is refraction? The bending of light. Simply you can say that bending of light. अच्छा bending of light कौन? How do you mean by bending of light? तो प्रिज्म रो प्रॉब्लम होता है. प्रिज्म रो कैसे सॉल्व करले किस कथा नहीं. What is refraction? The bending of light. That is your bending of light. अच्छा bending of light meaning कौन? Point number 1. अब देखिए जैसे देखी थी तो मेरा टॉप है गला ओडे ठीक हो ना वाटर टॉप अछि देखियो ऑब्जर्व करियो तुम ओडे कंटेनर रे ओडे कोन ओडे स्टिक अछि ओडे आबे लिक्विड रे वाटर अछि तो देखियो ए जो एटा जो देखाउ छी तो मुझे नॉर्मली तो मुझे जेट देखाउ जोडा रियल सेति की तार जो हमर मोटाटा हम थिकनेस टा ठीक अधिक मोटा देखाउ तो एनलार्ज देखाउ तो आ बेंड देखाउ तो एटा एठी अछि तो से देखाउ तो एठी अछि एटीएम देखाउ तो हमको लागु थियो ठीक अछि हमको अपियर होथियो बट एक्चुअली सेंत नथा है तब हाउस करना हम कोन पढ़िया refraction. When light rays coming from one medium to another medium. When light rays coming from one medium to another medium. When light rays coming from one medium to another medium having different refractive index. जते बेले गोटे लाइट रे कोटा से गोटे मीडियम रो आउटे मीडियम को आसे आ से दीटा मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम न हेई नथिबो
refractive index, it bends with some angle instead of going in same path called refraction एटे आउरी भी किछि पॉइंट ऐड कर परिबो आउरी भी किछि पॉइंट को सर कोन पॉइंट बुक रे तो डेफिनेशन एति के भी देइ दथिबो हेला किछि बुक रे कंप्लीट डेफिनेशन देबी ये भी कंप्लीट डेफिनेशन एते आउरी किछि पॉइंट ऐड हो कोन when a light is coming from one medium to another medium and medium having different refractive index dita medium पर different refractive index थिबो refractive index कोन कहबी व्यस्त होबाले it bends with some angle instead of and strikes obliquely having different refractive index it is mentioned कर परियो strikes obliquely ठीक है strikes obliquely then it bends with some angle instead of going in the same direction path or direction called refraction of light rays refraction of light rays तो पॉइंट नंबर 1 तो कोन सर व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू स्टूडेंट जो जानि नथिबो नुआ देखुथिबो वीडियो मोर व्हाट इज नुआ पढुथिबो रिफ्रैक्शन सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिंस कोन एक्चुअली होय कोन ना ये रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मार्टा कोन पे लिखिछि व्हाई वी आर यूजिंग रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट बेंड करूछ कोन पे लाइट बेंड करूछ व्हाई लाइट बेंड्स व्हाई लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फॉर एग्जांपल दिस इज योर एयर मीडियम and this is your glass medium or water medium this is your water medium ठीक अछि this is your water medium जेता लाइट रेट आसुथिबो पॉइंट नंबर तो कोन बोली रिफ्रैक्शन सेटा हो रिफ्रैक्शन कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन एटा देखिए कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्शन केते हो देखा तो सब देखो okay very good conditions for refraction a refraction hobo when refraction will occur point number 1 a refractive index should be different point number 1 a refractive index data medium for example this is medium 1 this is medium 2 our refractive index must differ heitiba darkar the next light ray incident ray I means incident ray or I am writing full sentence incident ray enters with some angle that means angle of incidence should be something angle of incidence किछि हेतिबा दरकार that means angle of incidence not equal to 0 angle of incidence not equal to 90 angle of incidence 0 है रिफ्रैक्शन होबनी angle of incidence जदि कोन हो 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो देन रिफ्रैक्शन भी होबो सरफेस रे पास करियो ठीक अछि अच्छा एक्सेप्शनल केस हायर तुम्हें हायर क्लासेस रे पढियो एगरो सब बे अप टू 10th पाइ दिस इज सफिशिएंट हैला ओदिया टंडी में बनिबार नै टंडी में बनिबार छै ऑफलाइन क्लासेस रे हम आर्गुमेंट करबे किछ কথা नै नाउ हम स्टिक टू द सिलेबस एक रहिबा तो इंसिडेंट रे ओब्लिकली एंटर करथिया दरकार ये होची कंडीशन रिफ्रैक्शन एबे त 50 रिफ्रैक्शन होय कोन एक्चुअली होय कोन ना देखो एटा होची दिस एटा जो कोन हम पढिते रिफ्रैक्शन चैप्टर रे दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाउ ड्रॉ ए नॉर्मल मींस व्हाट the line which is perpendicular to this surface this is an interface medium between air medium का एटा होची एयर medium एटा वाटर medium ठीक है अच्छा रिफ्रैक्शन को केमी बडे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन केमी दियो जानिबा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम केमी दियो जानिबा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c speed refractive index of any medium equal to speed of light in vacuum that is c by speed of light in medium v ठीक है that is mu equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. This is c represent speed of
light in vacuum divided by speed of light in medium ये होची रिफ्रैक्शन तो सर कोन स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम रे मीडियम अलग अलग भी हुए बिकॉज़ कोन पे रिफ्रैक्शन हुए बिकॉज़ व्हाट इज दिस इन एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस particles denser rare medium. Now if you will consider water medium particular liquid, the water molecule H2 molecule are closely packed to each other. That means point number 1, intermolecular distance between in water, the intermolecular distance in water or between H2 molecule is very less than the as compared to the molecules present in air जो molecules present थी particles present थे सेमानर intermolecular distance जति की थिबो ताठो बहुत कम थे liquid रे they are closely packed to each other. Then intermolecular force of attraction is greater in case of liquid as comparison to the in case of air. Is that clear? That means हमें कौन जान करेगा it has a denser medium. That means you can say that it is a denser medium. It is a denser medium. ठीक है, this is a denser medium. अरे रेट वाला नहीं लगता then this is a rarer medium. This is a rarer medium and this is a denser medium. This is R, this is D. तो एथि में रिफ्लेक्शन होय तो सर कोन में रिफ्लेक्शन होला बड़ा एग्जांपल होबा तो बालीयात्रा पड़िया अछि और नॉर्मल पड़िया अछि तो बालीयात्रा पड़िया रे बहुत क्राउडेड प्लेस थिबो देयर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lot of peoples due to lot of crowded place or lot of peoples the से दौड़िया स्टार्ट करियो नॉर्मल पड़िया नॉर्मल फील्ड तुम जेती स्पीड रे दौड़ते हैं तो बालीयात्रा पड़िया सेती स्पीड दौड़ परियो कि दौड़ परियो नहीं कारण एठी देखो बहुत कम लोग कोच प्रेजेंट अछि तो एठी आराम से स्पीड रेस करियो तो एठी स्पीड अधिक रहइयो जेते डेंसिटी अधिक हेगा जीवो मीडियम डेंसिटी जेते अधिक हेगा जीवो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर पार्टिकल्स जेते अधिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रहइबो द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम विल इंक्रीजेस ग्रेजुअली and that's why speed of light will decreases gradually. That's the logic, simple. So that's why refraction occurs. That's the refraction occurs. Refraction means what? The speed of light changes, and if speed of light changes, it bends either towards the normal or away from the normal. Point का से best अपना point का से. This is the scenario. एथि by refraction हुई. Then next come to the conditions. Then next come the refraction होगा कौन केतरे कौन हो. Refraction. If light rays comes from rarer medium to denser medium. Case number 1. If light rays comes from rarer medium to denser medium, this is a normal. If this is a rarer medium, if this is a denser medium. If light ray coming from rarer medium to denser medium, as the particles present in as this medium is very denser than as compared to this medium 1, medium 2. That means when light ray coming from rarer to denser medium, it bends towards normal. Its original path is this one. This is your angle of incidence and this is your angle of refraction. And here I is not equal to R. Angle of incidence is not equal to angle of refraction. When it will equal, केते बड़ा angle of incidence angle of refraction equal refraction ना होगा. जब refraction होगा नहीं सीधा पास करेगा. That means what? एबे just कहली. That means यदि angle obliquely incident कला परे भी refraction हो नहीं. After striking obliquely or after entering with some angle or obliquely, if refraction is not occurring or I equal to R, that means two medium have same refractive index. That means particle जो concentration ना ये rarer ना ये denser. The particle concentration in both the medium is same. That's why the speed of light is not varying and that's why refraction is not occurring. Simple logic. तो ये होची logic. आराम से हम लिखी परियो. ठीक है जी? Yes, Shreya. Okay, ठीक है. Then if light ray coming from denser to rarer medium, for example, this is coming light. Here point of incidence for medium 2 and medium 3. Now this is the normal, and this should be the path of light. But if denser medium to rarer medium light coming, the light rarer to denser astala, it moves towards the normal. If light are coming from denser to rarer medium, it moves away from the normal. This is the logic.
This is the logic. That means rarer ru denser gale kon hobo towards the normal, towards the normal. Denser ru rarer gale kon hobo away from the normal. Is that clear? ठीक अछि. ये होची रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक अछि. आमे देन नेक्स्ट आमे टे प्रॉपर्टी पढिबा हैला. ए कोन दिस द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction light is essentially of a surface phenomenon. ठीक अछि. ठीक अछि. What consider one transparent medium to another transparent medium. ठीक अछि. हमें transparent definition छाड़ देथिले किछ कथा नै मोस्ट मानर. ठीक अछि. हम देखै one medium to outer medium को पास करूछि हैला. तो प्रिपरेशन यदि हम प्रिपरेशन भूलभाल करूछे यदि compound interest in 3 year compound interest of 3 year meaning change you माने को कहला and preposition change करले तर meaning भी change हेजिवो. formula change हो concept change हो answer change हेजिवो everything will be changed. Now come to one transparent medium to another transparent medium. The light should be pass obliquely हैला. तो law of refraction हमें reflection की law पढ़ितले तो सेम refraction की law अछि. law of refraction ठीक अछि. तो फर्स्ट अपन इंसिडेंट रे सेम लॉ वन इंसिडेंट रे refracted ray and how and what is the point normal all are or point of incidence all are lies in the same plane lies on a same plane गोटे प्लेन पर रहे. देन rule 2 sin I angle of incidence sin of angle of incidence to sin of angle of ये कौन है चीज sin of angle of refraction sin I by sin R equal to constant that is called Snell's law. Snell's law very important. Snell's कहले कि for two given media दीटा given medium पर जो media पे sin of angle of incidence to sin of angle of refraction always constant because the torchlight रे पकोच torchlight angle of incidence बढ़ेला angle of refraction बढ़ेला angle of incidence reduce करो angle of refraction reduce हो. That means from here you can conclude that angle of incidence or angle of refraction is directly proportional to angle of incidence. पढ़िया एक्सरसाइज केस को पढ़िया किस व्यस्त होगा नहीं. Then next come to note in discussing refraction. Now onward the reflected ray from the boundary surface will not be shown through it is always there. Then next come to cause of refraction or cause of change in direction. cause of refraction कोई से तो सर कौन cause of refraction को just कोई refraction कौन पे होची आज actually concept बहुत है. Actually light have both dual nature and particle nature. लिखो mention करो very important. Light have both dual nature that is one is light have both dual nature that is particle nature of light and wave nature of light. Particle nature of light and wave nature of light. As light has both dual nature wave nature when a wave is passing देखो एडा जो wave pass करछे ए मीडियम पास करछे ए पास करिवो तो एडा छोटा wave रो ओडा कंप्लीट wave कोन हम कहथि कंप्लीट wave the consecutive distance between two crest or two trough is called as complete wave or length of a complete wave is called as wavelength. पढ़े थिली मु आ थरे पढ़े व्यस्त बना हम अपलोड कर दो जो जा दरकार जो टॉपिक कमेंट करियो मु सब अपलोड करियो. ठीक अछि. तो गोटे वेव रो गोटे पार्ट एंट्री करला ओटा पार्ट एंट्री कर नथिबो तो सेति में रिफ्लेक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कारण एटी द पार्टिकल देखो एटा है ये एटी पार्टिकल तो एटी पार्टिकल के प्रेजेंट अछि तो ऑब्वियसली स्पीड स्लो ही से हम लिखबा कोन आउ आई रिपीट when light rays coming from one medium to another medium having two different refractive index as two medium having two different refractive index that means
the particle concentration or particle density are different. That's why the speed of light it decreases or increases depends upon density of that medium. The medium, whether it is denser or rarer as comparison to another medium from where light rays coming. Is that clear? If if the medium will be denser, then light ray will move towards the normal. If the second medium will be rarer, then light ray will move to away from the normal. If this is the normal, this is the concept. This is all about refraction. Next, आमे discussion करिबा. ठीक अछि? एतरा ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଆମର ତ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କଭର କରିବା ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟାଟା ଭିଡ଼ିଓ ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭର କରିବା ଓକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ हाँ हाँ मुझे जी गोटे क्लास अच्छे क्लास जाऊँगी मुझे अच्छी तो मुझे अपलोड करदेवी गोटे यूट्यूब क्लास लाइव अच्छी लाइव जाऊँगी हाँ 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 ठीक अच्छे इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एवरीथिंग अरे सेपटे किए अच्छे पानी नहीं आसिल okay this is all about Snell's law. Next come to the effect of speed frequency and wavelength due to refraction of light effect of पांटिगाना नलाई आइसक्रीम जैसे व्यवस्था करें आगे सुंदर बनता है क्या दरकार नहीं पानी पांटी से श्रेया के साथ साथ कितना पटल पेपर Okay, in previous classes we have already discussed refraction, laws of refraction जो मैंने देखने थे previous lecture देखिए सर ये refraction हुए कौन पे actually कौन किंतु refraction हुए कौन पे speed of light decrease हुए increase हुए तार laws, properties, everything and conditions for the refraction. Then next come to the effect of speed and frequency and wavelength of light in during refraction of light. Okay, so we know that V equal to nu lambda. We know that V equal to nu lambda. V is equal to nu lambda. In some book it is written that is V equal to frequency into lambda. And where frequency is what? The number of waves or complete waves in some book are written. Don't worry. Passes in a unit second or in 1 second. Unit second. Then what is wavelength? The length of a complete wave. Length of a wave. What a wave or length term? Wave or length term. This is the length of a wave. And speed of light. This is a pillar में बहुत confusion होता है. That is wave length, frequency, wave velocity, wave number, amplitude, crest, trough, compression, rarefaction, everything. आप लोग completely video बने दबा जो दरकार जो सब बुझी पारिबे कहले मु बने देब कमेंट रे कहि देबो दरकार जदि मु देखि पिला एक्चुअली नीड होची कांसेप्ट क्लियर नै ताले बुझी देबो अपलोड कर दाओ रे जिस तरह हैला तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा यू नो तो हमें देखिबा एक्चुअली कोन इफेक्ट पकाय कोन इंपैक्ट पकाय when light refraction occurs when light rays coming from one medium to another medium
सो सेलिना फॉलो करके गुड वेरी गुड तो ये गुड पेड प्रमोशन नहीं जति बुक्स आईसीसी रो कथा कहूँ मु सेलिना इज बेस्ट सेलिना धरले सीबीएसई को रेफरेंस फॉलो करा दरकार नहीं सेलिना इज मोर देन इनफ आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस है आर्यन पाखर आरंभ कर एवरीथिंग सब कथा को जति मु फॉलो करछि सेलिना इज प्रिफरेबल दोस हु आर फॉलोइंग सेलिना स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीसी भुवनेश्वर. Okay, then let's come to the topic. In first one, when a ray of light gets refracted from rarer to denser medium, the speed of light decreases. While if it's refracted from denser to rarer medium, the speed of light increases. I have already explained in previous video. Already explained. So the age already explained questions. The frequency of light depends on the source of light, so it does not change on the refraction. As the speed can't change हुए, can't change हुए. When rarer to denser आसे, when पहले पूर्व lecture कहती when light is coming from rarer medium to denser medium, then its speed decreases. Speed decreases. That's why it bends towards normal. It bends towards normal. Then, if denser medium to rarer medium, light is coming from denser to rarer medium, then speed of light increases and away from normal. Is that clear or not? तो तुम कौन सी लेवल? हाँ? कौन सारा ऑलिया करी पोपो जो दी? क्यों लेवल? कौन बॉसी वो केम टाइम? से क्लास